Hello, I am Dr. Dhruv Zutshi. I am a neurologist working with Metro Hospital Faridabad and Holy Family Hospital Delhi. I'll be talking about headache disorders because headache is a very common disease in the society and a lot of people suffer from headache. We generally believe that headache can be due to gastritis or sometimes due to tension, but most commonly headache are due to some illnesses called as migraine or some other rare headache disorders. Then commonly sometimes patients may experience headaches if there is something wrong in the brain, like there is a brain tumor, there is an infection in the brain, or there is anything causing rise in pressure of the brain. So before we start believing that the headache is just due to some stress or gastritis, it is very important to meet the neurologist once so that you can discuss. Most importantly, उन पेशेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनमें कोई अंडरलाइंग कीमोथेरेपी चल रही है, कोई कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, बिकॉज दीज पेशेंट्स टेंड टू हैव मोर चांसेस ऑफ एनी abnormal infection in the brain or any tumor growing in the brain. Then young ladies में कई बार headaches होते हैं. These headaches are quite often migrainous in nature. इनमें जनरली पेशेंट की कंप्लेंट्स ये होती हैं कि पूरे सर में दर्द होता है एंड नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट के साथ सेंसिटिविटी, लाउड साउंड से हेडेक बढ़ जाता है. लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स नोटिस कि रेस्ट करने से आराम मिल जाता है या सोने के बाद उठने के बाद दे फील बेटर. सो दिस इज़ हाउ मोस्ट माइग्रेनर्स हैव हेडेक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज हेडेक्स बिकॉज दे आर कम्प्लीटली ट्रीटेबल. मेडिसिन से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. एक बहुत ही रॉन्ग मिसकंसेप्शन है जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है. माइग्रेन का इलाज है और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है. नियरली 90% ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स डू वेरी वेल ऑन ट्रीटमेंट एंड इवेंचुअली मेडिसिन्स हट जाती हैं और पेशेंट रेमिशन में चले जाते हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ हेडेक एंड टू ट्रीट इट प्रॉपरली. Just taking painkillers or some drugs like Vasograin does not help as they are only for one headache episode. To reduce the headaches from occurring again and again, it is very important to meet the neurologist who will then decide what kind of medicines are suitable for the patient and how the headaches can be stopped from occurring. So migraine is completely treatable. Then any of the patients, like I had said earlier, if they are cancer patients, patients who had chemotherapy, or young children, pediatric age group patients having headaches, you should immediately meet the neurologist because these patients can have something wrong with the brain and that can cause a lot of risk to life. So it is very important that you should consult a neurologist before just labeling that this is just a stress related headache or tension type headache.